class 10th, remember guys. So now I have this decision to take that am I going to continue with science and try my luck in JEE or NEET, where I was not very sure of because I was not really interested in those subjects. But secondly, because I was always an average student and I had this tension that the competition level of these examinations are such that everybody here has started their preparation from very early in class 7 or 8. I was not such a person. So with that sad thought, I realized, okay, these two options, the JEE and NEET, are not for me. I will have to try some other things. And with that thought, I went to my family one day, one nice evening. My parents were having their tea, and I asked my mom that साइंस से अब मैं बोर हो गया हूँ, कुछ फ्रेश चाहिए लाइफ में, कॉमर्स ले लेता हूँ. अब गृह युद्ध समझते हैं क्या होता है? सिविल वॉर अमेरिका में जो हुआ था, वो गृह युद्ध का सामना करना पड़ा 1 महीने तक मुझे, जहाँ मैंने खाना छोड़ा, बहुत तरीके के पैतरे अपनाए, बस एक बात के लिए कि मेरे पेरेंट्स मान जाए मुझे साइंस छोड़ के कॉमर्स करने को. क्योंकि उस समय की जो धारणा थी वो ये थी कि आप कॉमर्स तब लेते हैं जब आपसे साइंस नहीं समझ रहा. आप कॉमर्स तब लेते हैं जब आपके लिए कुछ होने वाला है नहीं. और उन्होंने क्या बोला मुझे कि तुमने पूरे खानदान का नाम फंसा दिया, क्योंकि आज तक खानदान में तुम पहले हो गए जो कॉमर्स लेने जा रहे. I was always the trailblazer, so I said, okay, no problem, but मैं यही लूँगा, मैं adamant हूँ, मेरे से science के competition are not my cup of tea. They finally accepted my demand and they allowed me to take commerce. Now in commerce, the same thing happened. As soon as I was with commerce, they had made their plans that if you have taken commerce, the only one thing that comes to mind is what? You will do CA. अब CA के साथ प्रॉब्लम ये है कि you will not get a good college for that. CA के लिए कोई ऐसा कॉलेज नहीं होगा. You prepare for yourself and then you compete in the examination. If you get good ranks, then it's okay. Good marks, then it's a percentage. So my dream of getting into a good college was not getting into fruition, and so I had to think about some other measures. So I went again to the Google Mata. I searched again that what are the career options available after 12, and then this list popped up, where in the bottom of the list there was this examination called CLAT. I was not aware of it like you guys. I was not aware of it at all. So I started searching about it. I got to know कि okay, इंडिया में लॉ के लिए भी कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं जो लॉ की तैयारी आपको करवाते हैं. 12th के बाद 5 साल की डिग्री होती है, और वो 5 साल में आपको वो जो आप वकालत और वकीलों को समझते हो वो वकालत वहाँ नहीं है. उस 5 साल में आपको कॉम्पिटेंट एडवोकेसी के स्किल्स एंड साथ में कॉर्पोरेट लॉ का ज्ञान देते हैं, जो आपको बस एक कोर्ट में नहीं मदद करेगा वकालत करने में, बट आप डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल बॉडीज के साथ काम कर सकते हैं, एनजीओज के साथ काम कर सकते हैं. एंड दैट इज अ टोटली डिफरेंट फील्ड जिस बारे में हमारे साइड में बहुत कम नॉलेज है. मैंने बोला कि यार if we go for IIT or AIMS, one thing that gives us the security is the placement that they're going to give us. The secure part is that they are offering you placement, and one thing is guaranteed कि अगर आप इस कॉलेज में जाते हो आपको कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा मिल जाएगा अगर आप थोड़ा ग्रेड रखते हैं. So I had to go into that kind of a college. So I started searching about these NLUs, these national law universities, जिनमें आपको एडमिशन मिलता है अगर आप क्लैट का एग्जाम की तैयारी करो. And then one thing popped up to me कि क्लैट के एग्जाम में कोई भी स्ट्रीम के बच्चे अपीयर हो सकते हैं. ये सबसे पहला टेंशन था कि मैं तो साइंस छोड़ चुका हूँ, क्या ये एग्जाम में साइंस वाले ही चाहिए या कॉमर्स वालों को अलाउ होगा. When I looked into it, I found out कि इसमें तीनों के तीनों स्ट्रीम्स के बच्चे अपीयर हो सकते हैं. Now tell me one thing, how many students appear for JEE? Yes, more than 10 lakhs. How many appear for NEET? More than 15 lakhs. Achha. When these examinations only allow you if you are from science stream, right or not? This examination allows you from any stream, and can you guess how many students appear for this examination? Like any number. Guess a number. 100? 11 lakh? Alright, और कुछ? आपको क्या लगता है? 11 lakh. Your number after 3 lakhs. 60,000 students appeared for this examination. Yes, only 60,000 students appeared for this examination. अब you might think कि सर इसमें कम स्टूडेंट अपेयर होते हैं क्योंकि इससे कुछ होता नहीं होगा, but that is not the reality. The reality is this
कि what are the career when the reality is completely कंट्री की आजादी के बाद से ही इन्हें बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी 1950 से आईआईटी एम्स का आपको काम चालू हो गया but then when it comes to law colleges or specific law colleges पहला law college आपको 1987 में इंडिया that was under the SIU in Bangalore and उस डेट से लेके आज तक 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इंडिया में खुल चुके हैं एक आपका पटना में सीएनएलयू की अगर कोई आदमी गए होंगे वहां मीठापुर में आपने देखा होगा and all these law colleges have one thing in common like as you have IITs for engineering they are there for law so जितना आपको IITs opportunity देते हैं जितना आपको AIMS opportunity देते हैं in terms of everything you will get a similar kind of opportunities in these and LUs. Now comes the tricky part. The problem with this is that most of us as students will have to face our parents when we make career decisions, right? You know? So in class 12, I went again to my family with this proposal that I want to do CLAT now. And obviously their response was, 10th में बोला था कि पूरे खानदान का नाम हसाया है अभी their response was कि बेटा वकालत वो करते हैं ना जैसे दुनिया में और कुछ तो उनका एक ही पेटेंट डायलॉग था जो मेरे से दिए जा रहे थे 10th में भी 12th में बोला हाँ मैं ऐसी चीजों के लिए बना हूं कुछ नहीं कर सकता है कोई नहीं करेगा मैं but they were really adamant कि वकालत से करोगे क्या तुम वकील करोगे नहीं तो जज बनोगे and they had not this idea कि वकालत के लिए they were having this notion कि आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन करना हो and then after आप 3 साल का LLB करो तो आपको तो 6 साल लगेंगे तुम्हारे फ्रेंड लोग अभी आईआईटी में चले जाएंगे इंजीनियरिंग में चले जाएंगे 4 साल में उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो तुमको नहीं लग रहा है कि 2 साल एक्स्ट्रा देके तुम वकालत करोगे to do what ultimately to get a black coat and practice in the court which so many people are doing around you and you can compare their life and to the life of a person who has qualified or graduated from IIT and that hit me so I went again to the Google Mata I searched again that what are the career prospects in these analytics कितनी placement है कितनी opportunities है क्या इनमें है scope and then I got to know कि okay there is a different field altogether which is called corporate law and this corporate law basically means that the law which are applicable which are applied in cases of companies in cases of corporations and that kind of a law is on boom in India because of the fact that India has allowed or has opened up its economy to every country every nation in the world so nowadays many nations and their MNCs their multinational corporations are coming to India are investing in India, are opening up their businesses in India. Similar is the thing with Indian people. We have now gotten this trend of doing entrepreneurship. Many startups are popping up. And what do they need even to begin their business? The first thing that they would require is to consult a lawyer. Don't you think? For any company to establish, you need a lawyer who would take you through the legal compliances, who would explain to you how to start up a company and how to simply get behind the government approvals. So every company nowadays, every organization nowadays hire these lawyers. So I was then sure that if I use my word, I will get a job. But the second question was what kind of job? Because that is also a very pertinent thing. आपको जॉब तो अवेलेबल जाता है बट जॉब की भी क्लासेस होते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब विल आई गेट उसमें प्लेसमेंट का स्कोप क्या होगा एंड फॉर दैट आई एम रियली सॉरी दैट आई एम नॉट कनेक्टेड माय लैपटॉप आई हैड सम सोर्सेज दैट आई कुड हैव टेकन यू बट मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद घर पे गूगल पर होगा तो बहुत सभी को आशीर्वाद खुद घर पे एक छोटा सा सर्च करिएगा एंड कंफर्म करिएगा इस बात में मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आप एनएलयूज के प्लेसमेंट की बात करो मैं खुद शॉक हो गया जब मैंने पहली बार ये चेक करा 2015 का वो टाइम था मैंने तैयारी करी थी फ्लैट की पर उसके करने से पहले मम्मी पापा को कन्विंस करना था तो मैंने सर्च किया कि क्या है प्लेसमेंट रिकॉर्ड एनएलयूज का क्योंकि 1987 में खुले हैं आईआईटीज वाला उनका नाम अभी तक नहीं हुआ है पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है प्लेसमेंट देते भी हैं और देते हैं तो कितने का देते हैं दैट वाज माय मेन कंसर्न बिकॉज़ ट्रूथ बी टोल्ड आपको कितना भी कोई कह ले कि यार मोरालिटी एंड the work satisfaction and all of those things matters but ultimately you also need money at that point of time I had always dreamt of
earning money. So I was with this intention कि कितना पैसा उसमें मिलता है, placement क्या होता है. And in my search and then in my real experience, what I have gotten to know is what I'm going to share with you. I want you all to just confirm it with the Google. Alright? See, nowadays, top 15 to top 15 NLUs out of these 23 don't only claim but have guaranteed 100% placement. What that means is however students or how many number of students wants to appear for the placement committee, all of those students will be placed with some company or another. Now you might say is a placement is one thing, but for what salary, for what package? And it ranges from 15 lakh to 25 lakh. The average being 15 lakh, the higher side being 25 lakh, the lower side being 9 lakh. Not below that. That is the average packages of an NLU in today's. Then you might argue कि सर 100% placement मतलब सारे के सारे बच्चे तो चले जाते होंगे जॉब में इतने इतने पैसे के लिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप क्यों काला कोट पहन रहे हैं? आप क्यों वकालत कर रहे हैं? Because not all of us, after doing 5 years of law, not all of us wants to go to a company and then get a good job, earn salary, and work in a AC office. Some of us wants to pursue law. Some of us has different aspiration, and so many of us decide not to sit in the placement committee. Like in my batch, there were 120 students, 22 of which decided not to get placement. But the rest of the students did get placed, and not only placed, but at good reputed firms with good packages. But this information was not available to me. I forget my parents because they had no idea that this kind of thing exists. I showed it to them. I finally convinced them, saying I will get this much salary, I will get this much package. Think about it, life set हो जाएगा जो आप हमेशा से कहते हैं. IITs इन्हें लाइफ सेट करते हैं, एनएलयूज भी लाइफ सेट कर सकते हैं, कह के मैंने उनको कन्विंस किया. एंड देन मैंने तैयारी शुरू की और जब तैयारी शुरू किया वहां पे जाके मुझे सबसे ज्यादा बड़ा शॉकर लगा. इन अ गुड वे, इन अ गुड वे. अब मैं आपको बताऊं तो जब आप तैयारी करते हो प्लान का या किसी भी कंपटीशन का, एक जो कंसर्न रहता है हमारा वो ये रहता है कि ये पढ़ाकू बच्चे, ये बच्चे जो क्लास 7 6 से 6 घंटे पढ़ने की आदत बना रहे हैं. अब वैसी आदत मेरे में थी नहीं, तो मुझे लगता था कि कंपटीशन में अगर मैं अभी से 2 साल पूरा मेहनत कर ली, 1 साल पूरा मेहनत कर दी, तो जो लोग 6 से 7 से साइंस के फॉर्मूलेज को, मैथ्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनसे कंपीट कैसे कर. तो मुझे ज्यादा एग्जाम चाहिए था, कॉमर्स में जब फ्रेश था, वैसे एग्जाम चाहिए था फ्रेश. मतलब एक ऐसा एग्जाम जिसमें हम सबके सब बराबर हो. अब अगर वो केमिस्ट्री होता, फिजिक्स होता, तब मैं ये बात नहीं क्लेम कर सकता था. पर जरा सुनिएगा इस एग्जाम में सेक्शंस क्या क्या आते हैं. 120 नंबर का एग्जाम है, ये 2 घंटे में होता है. सही जवाब पे आपको 1 मार्क्स मिलता है, गलत पे आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है. बट अगर आप एग्जाम के पैटर्न की बात करो तो पहला सेक्शन इसमें होता है लीगल रीजनिंग. क्या? यस. नाउ टेल मी, I mean, how many of you here feel you are expert at legal reasoning? Anyone? We might have heard of reasoning. Some of us might have solved a few questions of reasoning. But legal reasoning, anyone? No, not at all. So this is a subject which is going to be new for everyone, and whomsoever decides to do their work or to determine or to dedicate their effort will get success because they will be able to defeat those persons who are not doing that much work. So what matters is कि जब आप तैयारी शुरू करोगे तो आपको कितना ज़्यादा मेहनत करना होगा. और मैं ये मेक श्योर किया था कि जब मैं एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करूंगा तो मेरे से ज्यादा घंटे कोई नहीं देगा, मेरे से ज्यादा उसमें एफर्ट कोई नहीं देगा. एंड आई डिड दैट. बट ये एक सेक्शन की बात हुई लीगल रीजनिंग की जो 35 नंबर का होता है. बाकी सेक्शंस क्या है? अब इससे पहले कि मैं आपको बाकी सेक्शंस पे ले जाऊं, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को एक लीगल रीजनिंग का एग्जांपल दूं. आपको चाहिए एग्जांपल? क्योंकि आपको कुछ आइडिया नहीं लगा होगा ना लीगल रीजनिंग सर बोल गया, बट वो होता क्या है, तो मैं आपको समझाता हूं. देखिए आपको एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है ना, एक इंग्लिश में पैसेज होगा, जो पैसेज होगा लॉ से रिलेटेड, और जिसमें आपको वो बताएंगे इंडिया के कुछ लॉ के बारे में और कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में. आपका काम होगा उन प्रिंसिपल्स को समझना, उनके ऊपर आधारित फैक्ट्स को अप्लाई करना और स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो बोलो मैं समझ नहीं आएगा तो एग्जांपल दूंगा. प्रिंसिपल कुछ इस तरीके से होगा. And India killed a human being. Human being. Right? ध्यान रखिएगा, killing a human being is
to mortal. Everybody gets punishment for that, except for a child below the ages of 7 years, an insane person, or a child between the ages of 7 to 12, but who is immature. बताइए प्रिंसिपल समझे आप लोग? प्रिंसिपल समझ में आया? नहीं आया? चलिए एक बार और सुनिए। इंडिया में किसी इंसान की हत्या करना अपराध है, इसको मर्डर कहते हैं, इसके लिए सभी को सजा मिलती है, लेकिन 3 क्लास ऑफ पीपल को सजा नहीं मिलती। पहला, 7 साल से छोटे, दूसरा 7 के बाद तीन क्वेश्चन पहले सुनिएगा। सो तीन क्वेश्चन मैं पूछूंगा, पहले क्वेश्चन सुनिएगा फिर जवाब देना। पहला क्वेश्चन है कि एक 6 साल का बच्चा है, वो डिफेंस सेक्टर में रहता है, उसको कहीं से एक ग्रेनेड मिल गया जिसको उसने एक फल समझा, वो घर आया, उस फल का उसने डंठल तोड़ के अपने चाचा को बोला, चाचा ठीक है आज। दूसरा क्वेश्चन है कि एक आदमी जंगल से जा रहा था, उसको दूसरा आदमी जंगल में लेटा हुआ देखा, उस आदमी जो लेटा हुआ था उसने अपने बगल में एक तलवार रखी थी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जानवरों से। इस जाते हुए आदमी ने उसके तलवार को उठाया, इसका सर इसके धड़ से अलग किया, ये सोचते हुए उसके सर को छुपा दिया कि जब वो जागेगा और अपने सर को ढूंढेगा तो कितना मजा आएगा देखने। तीसरा क्वेश्चन, एक एक एक, एक 5 साल का बच्चा अपने 11 साल के भाई के पास दौड़ता हुआ आया, उसने कहा भाई को कि भैया भैया मैं बाहर गिर गया हूँ, गंदगी लग गई है, मम्मी आएगी बहुत पीटेगी, जल्दी से मुझे साफ कर दो। भाई ने उसको उठाया, वॉशिंग मशीन में डाला, ऑन करते हुए बोला बंदर की तरह साफ हो जाएगा। भाई पूरा साफ हो गया। अब सवाल है कि तीनों क्वेश्चन में आप किसी को सजा दोगे? नहीं ना, कितना इजी था क्वेश्चन। इसमें आपको केमिस्ट्री का हेल्प आया, फिजिक्स कुछ मदद किया, मैथ्स वाले खुश होते हैं, मैथ्स वाले सारे एग्जाम में, हमारे लिए तो एग्जाम ऐसे इजी है, लेकिन इसमें लीगल में कुछ नहीं ना। आपका मेंटल आईक्यू है, आपका आईक्यू क्या है, आप क्या कॉमन सेंस रखते हैं, दैट विल हेल्प यू। बट अगर इतना इजी होता तो मैं आपको एक बात बताऊंगा जिसमें जाके आप हैरान हो जाओगे कि 120 नंबर में कट ऑफ इस एग्जाम का जानते हैं कितना है? 60, 50%। कभी सुने इतना कम कट ऑफ? एग्जाम इतना भी इजी नहीं है, और उसका भी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक और क्वेश्चन मैं लीगल रीजनिंग आपसे पूछता हूं, तैयार है आप लोग? इंडिया में किसी दूसरे इंसान का सामान उससे बिना पूछे ले जाना अपराध है, जिसको चोरी कहते हैं। ठीक है? In India, taking away someone's property without their consent is called theft. Question is, श्याम राम के घर पे आया, जो उसका भाई था, उसने राम के बेटे को जमीन पे खेलता हुआ पाया, उसने उसके बेटे को अपने कंधे पे डाला, बिना राम को बताए अपने घर लेके चला। क्या श्याम ने यहाँ पे चोरी की है? क्यों? अरे तो बहुत अच्छा, गुड गुड गुड, ओके दैट्स इट। मतलब आप अगर इतना जान रहे थे तो दैट्स सम लेवल, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हमारे यहाँ का सीधा आएगा हाँ सर, क्योंकि बिना पूछे लेंगे। बट बच्चा इज नॉट अ प्रॉपर्टी, बच्चा इज नॉट अ सामान। बच्चे को अगर ले जाते हैं बिना उसके माँ बाप को बताए, उसको क्या कहते हैं? उसको किडनैपिंग कहते हैं। और नाम में ही छुपा हुआ है ना, किड का मतलब, किडनैपिंग का मतलब बड़े लोगों का किडनैपिंग को क्या कहते हैं? एब्डक्शन। तारक मेहता में गलत दिखाता है, चंपक चाचा को ले जाता है, उसको किडनैपिंग कहता है, दैट इज नॉट, इट इज एक्चुअली एब्डक्शन, इट इज एक्चुअली एब्डक्शन। सो देयर आर टर्म्स फॉर इट, देयर आर वर्ड्स फॉर इट। आपको कुछ उसमें भी पढ़ाई तो करनी होगी, प्रैक्टिस तो करना होगा, इतना इजी नहीं है, लेकिन इतना नया जरूर है कि आपको एक बार फिर से एनर्जी दे रहे कि चलो ये एग्जाम में हम लोग नया कुछ पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग अपना पूरा झोंकते हैं, क्योंकि जितना जो एफर्ट डालेगा उसको उतना रिजल्ट मिलेगा एग्जाम में, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट ये तो एक सेक्शन हुआ। दूसरा सेक्शन है जीके। अब जीके की जब बात आती है तो कुछ बच्चे हमारे काफी खुश होते हैं, क्योंकि वो अर्णव गोस्वामी को रेगुलरली देखते हैं, क्योंकि वो कभी कभार लल्लन टॉप देख लेते हैं, तो दे अंडरस्टैंड कि उनको न्यूज का है खबर। ऐसे कुछ बच्चों ने क्लेम भी किया
करंट अफेयर्स तो मेरे लिए इजी है सर, मैं तो ऐसे ही कर लूंगा। अगर क्या आता है क्लास में करंट अफेयर्स, मैंने उससे पूछा, आई टोल्ड मी कि सर मुझे पता है सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है। सो करंट अफेयर्स की भी क्वालिटीज है, क्लास है, और आपको करंट अफेयर्स जो पढ़ना होगा वो काफी डीप में पढ़ना होगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड पढ़ना होगा। तो इसके लिए आपको, जैसे अभी आपका एक करंट अफेयर्स काफी रेलेवेंट चल रहा है, बताइएगा कुछ जो काफी रेलेवेंट हो रहा है दुनिया में अभी। इजराइल फलस्तीन के बीच में जो हो रहा है ना, अब उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स ये नहीं पूछेगा कि इजराइल फलस्तीन में क्या हो रहा है, तो सबको पता है। वो आपसे पूछेगा कि उनमें पहला एकॉर्ड कब हुआ था, इसका पिछले वॉर का नाम क्या था, इससे पहले सबसे बड़ा वॉर कब हुआ था, उसका नाम क्या था। मतलब आपको उसमें भी पढ़ाई करना होगा, जीरो से करना होगा। लेकिन एक चीज की गारंटी है कि किसी को भी पता नहीं है, तो आप सब सेम लेवल पे होंगे इस एग्जाम। थर्ड सेक्शन क्या है, तो थर्ड सेक्शन आपका है लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग भी कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें सेक्शंस होते हैं। जैसे आपको टॉपिक्स होंगे इन्फरेंस बेस्ड, अजम्पशन बेस्ड, आर्गुमेंट बेस्ड, ऐसी चीजें हम लोग नहीं पढ़ते हैं 12th तक, तो उसके लिए भी आपको अलग से तैयारी करनी होगी। फोर्थ सेक्शन है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, और ये सुन के कुछ मैथ्स वाले खुश हो जाएंगे, सर आप बोले थे कुछ भी नहीं आएगा, सब फ्रेश आएगा, मैथ्स तो आगे। बट डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो इस एग्जाम में मात्र 10 नंबर है, 120 में 10। अब उस 10 नंबर में अगर आप शून्य भी लाते हैं, तो भी अगर आप बाकी सेक्शन में अच्छा मार्क्स ले आए, आपका ओवरऑल रैंक आ गया, कोई उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब सेक्शनल कट ऑफ करके इसमें कुछ नहीं होगा। तो मैथ्स वालों को भी डरने की जरूरत नहीं है, बस लीगल स्ट्रॉन्ग कर दो, क्योंकि मेरी कहानी वही थी। मैं सोच के गया था मैथ्स में तो घंटाधार होना है अपना, वही हुआ। लेकिन लीगल में ऑल इंडिया रैंक 6 था, मैथ्स में ऑल इंडिया रैंक 3000 से बाहर था, ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक 341 हो गया। तो अगर आप मैथ्स में पुअर हैं, किसी एक सेक्शन को काफी स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, मैनेज हो जाएगा वो। बट मैथ्स भी बहुत इजी आता है, तो मैं तो कहूंगा मैथ्स में भी नंबर लाइए। मैं फोर्थ कॉलेज में गया, आप नंबर 1 कॉलेज में जाइए, मैं सही बैंगलोर में जाइए। तो मैथ्स को भी करना बहुत इजी होगा, बहुत ही बेसिक लेवल मैथ्स पूछते हैं, बस 10th के लेवल तक का होता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ऐसे सवाल होते हैं। आपको डेटा दिया रहेगा, उससे आपको 5 क्वेश्चन पूछेंगे। एंड जो फाइनल सेक्शन है वो है इंग्लिश। अब इंग्लिश वो नहीं जो आप सोचते हैं, इंग्लिश में बस एक ही चीज पूछते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आपको वो 5-6 पैसेजेस देंगे, और वो पैसेजेस होगा इकोनॉमी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड, डिप्लोमेसी से रिलेटेड, फिलोसफी से रिलेटेड, और आपको उससे सवाल बनाने होंगे। तो उसके लिए भी आपको अपनी वोकैबुलरी एकदम इम्पेक्टेबल करनी है, उस लेवल पे ले जानी है जिसका कोई तोड़ नहीं। डेली द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल एंड ऑल दोस थिंग्स आपको करने होंगे अपनी वोकैबुलरी के। So the point here being, the whole examination is set out to give you a equilibrium, to give you an equalizer kind of an effect. क्योंकि आप कितना भी पहले से पढ़े हो नहीं पढ़े हो, in this exam, for this exam, all of you are kind of on the same level. जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा अपने प्रिपरेशन के दौर में, उसका उतना ज्यादा सक्सेस के चांसेस हैं। And that is not just a assumption, but something which I have proven. So why I have been discussing these things with you? Because I am sad for the fact that I chose to come back to Bihar with this intention that I will do something here, that I will work for my own place, that I will be with my own family, and then when I come into this place, I get to see that the situation are still the same. The students are still with the same options. They are being herd into this culture of doing IITs or NEET, and for that they are going to कोटा। आपको पता होगा कोटा में एक कहावत है कि वहां स्टूडेंट, टीचर एंड चाय वाला सारे के सारे ज्यादातर कहां से, बिहार से। नीट में वही हालत है, बिहार के स्टूडेंट्स इतने ज्यादा है। जब क्लैट की बात आती है, बिहार के स्टूडेंट्स 1% है, मात्र 1% है, उससे कम। आप समझ रहे हैं, इतनी लैक ऑफ अवेयरनेस, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज, इतना लेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट जस्ट बिकॉज वी डोंट नो इट, हमने अपने दोस्तों को सोच के देख के यही फैसला किया कि हम भी आईआईटी कर लेंगे, हो जाएगा समहाउ। बट समहाउ तो कोई भी कंपटीशन नहीं होता। जिस लेवल का कंपटीशन आपकी कंट्री में है, समहाउ कोई कंपटीशन नहीं होगा जब तक आपको उस कंपटीशन का इन एंड आउट नहीं पता है, जब तक अपनी स्ट्रेटजी में फुल ऑन नहीं। और यकीन मानो, कुछ करो ना करो, बट ये 2 साल अगर तुमको लोग कहते हैं 10th के बाद 12th तक कि that will make your life, there is some truth in that. There is some truth in that, because I have seen people. I have seen people. There was a Himadri college in Uttarakhand. Some of my batchmates जो मेरे स्कूल वाले थे,
उन लोगों ने पहले आईआईटी की तैयारी करी, नहीं हुआ, दे गॉट टू नो कि मेरा क्रैक हो गया, दे रियलाइज कि भाई जब उसका हो गया तो मेरा तो हो ही जाएगा, दे स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन, couldn't make it क्योंकि टाइम उनके पास बहुत कम था। उन्होंने सोचा हम एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन इन द हिमाद्री यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ईयर के बाद उनका कॉलेज बंद हो गया और कुछ बच्चे वहां पे 3-3, 4-4 साल से थे, उनको कोई डिग्री नहीं मिली, कॉलेज में कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कुछ नहीं। सो माय पॉइंट इज गाइस, 10 लाख स्टूडेंट्स से तुम्हारी भीड़ में लड़ाई है, जब तक तुमको एक कोई एडवांटेज नहीं मिल जाता अर्ली इन योर लाइफ, इट विल बिकम रियली डिफिकल्ट। Take that early advantage, at least secure a good college for yourself, and securing a good college does not really mean कि आप IIT के जरिए करो या NEET के जरिए करो। For those who are interested in argument, are interested in literature, are interested in reading, could also pursue this career called law. Thank you everyone. That was about that. So we are running short on time. I had this intention to take you through the discussion in a much detailed manner, but we are running short on time, so I will keep this brief and I will discuss simply about some relevant laws for you all. See, recently a case happened. See, I'm talking about a real case. Are you interested in listening? Okay, then listen. What happened in this case? There was a model who had gotten this contract for this shampoo company. She had to go and do some photo shooting. And this was happening in 2020 when Corona was at its peak. So she went to this hotel in Delhi called Hotel ITC Modem or something like that. This is a 5-star hotel. And there she requested the hotel कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, मैं बाहर किसी बार्बर पे नहीं बिलीव कर सकती हूँ, आप अपना बार्बर प्रोवाइड कर दो, I had to trim my hair. So the company provided her a barber. She told the barber कि मेरा hair 2 centimeter clip कर दो, 2 centimeter trim कर दो, बस 2 centimeter. The barber somehow forget this and he trimmed her hair 12 centimeters. 2 और 12 में बहुत बड़ा फासला है। और उसको जो पूरा का पूरा ad था वो किस बात का था? शैम्पू का था। तो her contract was cancelled by the company. The company told her that now you are not competent for the contract. And she lost 1 crore on that because the contract was costing her 1 crore rupees. She went to file a consumer complaint, and in the consumer forum, she received a compensation of initially 1 crore, which was later revised to 2 crore rupees. Now, this case might not be of much relevance to you, but I'm just trying to signify the importance of these laws that are there to protect you. अब रिसेंटली क्या हुआ है, तो एक आदमी अपनी बेटी को लेके जाता है KFC में एंड वो ऑर्डर करता है चिकन नगेट्स। जैसे ही आया नगेट्स, उसकी बेटी ने सीधा उसमें हाथ डाल दिया, उसके हाथ जल गए। अब उन्होंने उसका फोटो लिया और कंपनी के खिलाफ केस कर दिया। She received 35,000 compensation, which was later revised to 1.5 lakh. हल्का सा बर्न हुआ था हाथ में, हल्का सा, ज्यादा कुछ। In another case, a woman was very fond of Doritos chips, जानते होंगे। So she used to order it almost every day in her hostel. She used to eat it every day. And one day she decided to put one Dorito box on a weighing scale. And on that weighing scale, it showed her 47 grams. The box containing it claims that it is 50 grams. So she got this suspicion. She ordered a few more boxes. She put all those boxes, and every box had this deficit 1 gram, 2 gram, 3 gram का। तो पैक करते वक्त 1-2 चिप्स खा लेता होगा। So whatever might be the reason, but she decided to file a complaint against it. She recorded that whole scene and she uploaded it onto the Consumer Forum website. What happened in her case? Initially, she received a compensation of nearly 25,000 rupees. But later on, when she filed a revision in the higher court, the National Consumer Forum awarded her 23 lakh rupees in compensation. अब you might say कि सर इतना कैसे चिप्स खा गई कि उसको 23 लाख का लॉस हो गया, इस कारण से उसको नहीं मिला। उसको मिला कि उसने जो एक्ट किया उससे उसी का नहीं बल्कि उसके जैसे कितने ग्राहकों का हक बच गया। तो उसने कंपनी के खिलाफ विसल ब्लोइंग का एक्ट किया और उसको अवार्ड दिया गया। इसी टाइप के कॉम्पेंसेशन को एग्जाम्पलरी कहते हैं, एग्जाम्पल सेट किया गया। The point is कि आपके साथ आप जितना ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या आप डे टू डे लाइफ में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं,
बहुत जगह यू फाइंड दिस डेफिसिट, आपने टिकट लिया उस पे है डिपार्चर टाइम 5 बजे, डिपार्चर हो रहा है रात के 9 बजे। एंड व्हाट वी डू इन रिस्पांस टू दैट, तो वी सिंपली डिसाइड कि कंपनी को गाली देंगे और उसके दोबारा कभी सर्विस नहीं लेंगे। लेकिन ऐसे में एक आदमी बिहार का ही जिसको जम्मू कश्मीर में जाना था एक एग्जाम देने, जिसके बाद उसको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला था, the person knew कि उसको गवर्नमेंट जॉब ऑलमोस्ट मिल जाएगा, तो the person had already decided to get married and उस गवर्नमेंट जॉब के बेसिस पे उसकी शादी भी होनी थी, जैसा जनरली होता है, ऐसा कुछ अनयूजुअल इसमें है नहीं। आदमी गया पटना स्टेशन पे और 2011 की बात है और ट्रेन था 24 घंटे, होता है, ये भी होता है। ऑब्वियसली आदमी नहीं पहुंचा जॉब इंटरव्यू में, नहीं मिला जॉब, जॉब नहीं मिला। दूसरा जो एप्लीकेशन आया 3 साल बाद आया, तो 3 साल का लॉस हुआ। दूसरी चीज, जॉब नहीं मिला तो ऑब्वियसली जो शादी उसके ऊपर डिपेंडेंट थी वो शादी भी टूट गई। इसने केस किया कोर्ट में रेलवे के खिलाफ, इंडियन रेलवे के खिलाफ, एंड द कोर्ट डिसाइडेड टू अवॉर्ड हिम कॉम्पेंसेशन ऑफ 11 लाख रुपीस। उसने बोला सर 11 लाख रुपीस मेरी शादी टूटी है, तो कोर्ट बोला नहीं, शादी के लिए आपको पैसा मिल भी नहीं रहा, आपको पैसा मिल रहा हो 3 साल का जो लॉस हुआ आपका उसके लिए। आप 1 साल 4 लाख रुपए कमाते, 3 साल का आपका 11 लाख का हमारा निकलता है, वो हम आपको अवॉइड करवा देंगे, बट उससे ज्यादा नहीं। But still, it did do some kind of justice to the person. The person must have felt a bit better because of that compensation. And what would we have done, or what we would have done, हम जनरली ऐसे केसेस को इग्नोर कर देते हैं, जबकि गवर्नमेंट की पोर्टल्स इतनी इजी हो चुकी है इसके लिए कि यू डोंट नीड अ लॉयर, यू डोंट नीड टू फाइल अ पुलिस कंप्लेंट, यू सिंपली नीड टू विजिट दिस वेबसाइट, विजिट दिस पोर्टल, रजिस्टर योर कंप्लेंट एंड दैट वुड बी इट। वो आपको एक ऑफिसर अपॉइंट कर देंगे, वो उसके आगे का काम देखेंगे, आपको बस कंप्लेंट रजिस्टर करना है, दैट इज ऑल व्हाट यू नीड टू डू। बट सेकेंडली जो लॉ के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट है, तो जरा बस 5 मिनट मेरे को सुनिए। दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन, एंड दिस इज अबाउट एन इंसिडेंट व्हिच हैज हैपेंड टू मी रिसेंटली। सो आई वाज इन दिस स्कूल इन पटना वेयर आई हैड अ टॉक विद द प्रिंसिपल सर, एंड ही टोल्ड मी कि एक रीसेंट केस आया है जहां पे एक स्टूडेंट हमारे स्कूल का 6th में पढ़ता है, 13-14 साल की उम्र है, उसने एक फेसबुक अकाउंट से रिक्वेस्ट भेजा अपनी क्लासमेट को, क्लासमेट ने उसे ब्लॉक कर दिया। उसने अपने मम्मी के नंबर से दूसरा अकाउंट बनाया, उसने फिर से रिक्वेस्ट भेजा, क्लासमेट ने फिर से ब्लॉक कर दिया। उसने उस दिन अपने घर में पापा, चाचा, चाची, नाना, नानी, दादा, दादी सबके नंबर से इतने सारे अकाउंट बनाए कि टोटल 11 अकाउंट बने और 11 बार उस लड़की को रिक्वेस्ट किया और उसने 11 बार इसको ब्लॉक किया। Now listen, 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 listen. This is the problem. This is the problem. This is the problem. Let me come to the point now. What happened then? The girl decided to confess this to her family. So they went to her father. She told him all about it. The father went to the police station, and there he filed a complaint of stalking. Now what is stalking? What is stalking? Do we know what is stalking? I will tell you what is stalking. So what happened with the boy? Let me come to that first. The police filed a complaint against the boy. The boy was served a notice. The school was served a notice. The school was told that do something against the boy, take some disciplinary action. The principals are just concerned that what now to do with the kid, because he is not really a bad person as such. He is not really a criminal as such. He is just a kid with some wild ideas, and he decided one day to experiment with those ideas. So I was flabbergasted. I told him, sir, that cannot happen. I mean, anyone could have gotten the message after 3 blocks, right? 3 बार जब ब्लॉक कर दिए 11 अकाउंट कोई नहीं बनाता। मैंने बोला ना सर कुछ तो गड़बड़ी है, मुझे इससे बात करना है। तो सर ने बोला ओके मैं आपको इससे फोन पे कांटेक्ट करा सकता हूँ, अभी तो आ नहीं रहा स्कूल वो। उसके मॉम को कॉल किया गया, फिर वो फोन पे आया, मैंने उससे बस बात करी, बस जानने के लिए कि व्हाट वाज गोइंग ऑन इन हिज माइंड। What he told me was the thing which shocked me, and he told me that sir ये काम तो हमारे दोस्त सर्कल में सब लोग करते हैं, इसमें क्या हो गया, हमको पता ही नहीं था कि ये क्राइम। समझ रहे मेरी बात? अब बात सही है आपकी, ये आपको भी नहीं पता क्राइम है। आप में से कितना को पता ये क्राइम है? आवाज जरूर होता होगा, लगता जरूर होगा कि कुछ गलत कर रहे हैं, बट कितनों को पता कि ये क्राइम है, इसके लिए 2 साल 1 साल की सजा तक हो सकती है आपको? बहुत कम हो रहा है। उसको भी नहीं था, उसने बहुत लाइटली लिया और उसने बोला कि सर मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैंने देखा क्या होता है, मुझे लगा बस चलेगा। And then I told him, do you know about this law nowadays called POCSO?
क्या पॉक्सो के बारे में आइडिया है हमें? व्हाट इज पॉक्सो? That is protection of child from sexual offenses. And even though the law has sexual in it, but it does not mean it will only protect a child from sexual offenses. It also protects a child from cyber crimes. Stalking एक चीज हो गई, किसी का पीछा करते हो बेमतलब का, उसके ना करने के बावजूद, that is stalking. 1 साल तक की सजा है. बट दूसरा जो हम लोग और ज्यादा करते हैं वो ये है कि किसी के फोटो, किसी के मैसेज कुछ भी कमेंट कर रहे हैं, भद्दी भद्दी बातें लिख रहे हैं, अब्यूजिव वर्ड्स कर रहे हैं वहां पे. That is also a crime, dude. That is the crime of bullying. And उसके लिए 2 साल की सजा है. That is known as cyber bullying. Thirdly, हम लोग फोटो किसी का डाउनलोड करके उसकी अकाउंट बनाने का काम करते हैं. That is also another crime, which can be termed as morphing or sexual harassment. तो ये सारी चीजें आज के डेट में इंडिया में है, बट प्रॉब्लम ये है कि what to do if something like that happens to us. तो लेट मी टेल यू, एक जो प्रॉब्लम थी कि सर बच्चे कंप्लेंट कैसे करें अगर चाइल्ड अब्यूज होता है, अगर कुछ भी ऑफेंस होता है चाइल्ड के खिलाफ. और बच्चों में क्या बस लड़कियां आएंगी? तो पॉक्सो एक्ट लड़की लड़का दोनों को प्रोटेक्ट करता है. सबसे पहली चीज बच्चों पे डिफाइन करता है ये एनीवन बिलो द एजेस ऑफ 18 इयर्स, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो. एंड देन इट टॉक्स कि किसी पे कंप्लेंट अगर फाइल करना है तो दे डोंट नीड अ पुलिस स्टेशन, दे कैन सिंपली फाइल अ कंप्लेंट by going to this portal called POXO e-box. POXO e-box. E मतलब email जैसे है वैसे ही e-box, e is electronic. So POXO e-box पे what are the features? Anyone can go to that website, either the victim or anyone on behalf of the victim, and they can file a complaint in some simple procedure by following some simple procedure in some easy steps. You don't need a lawyer, you don't need a policeman, you don't need to file a complaint. Nobody will harass you, nobody can take you to the court to ask you questions. Nothing of that sort will happen. A child will be taken care of in a very sensitive manner, and the court will determine that how the child will be rehabilitated. So that is the main focus of POXO law. The whole intention of talking about this is that at least for once, because this law creates a reporting obligation, it says that whomsoever knows about a child abuse case but choose to remain silent about it can also be punished for 6 months. So for once at least go visit this portal POXO e-box, get to know this portal, and if unfortunately such an incident occurs in your vicinity or in your knowledge, do report it because the law nowadays takes utmost care of it. That will be all for POXO as well. Thank you students for listening to me so patiently. Okay, as I promised earlier, I will not make it a lecture, but I did so. So now I will be taking a question. If you have any questions, simply raise your hand. I will be happy to answer. Any question related to clan or law? We have some time on our hand. कहाँ से आवाज आ रही है? क्या? मैं आ जाऊँ, नीचे आ जाऊँगा. बताइए, आप लोगों का कोई डाउट है? पहले फ्लैट के बारे में आपको आप लोगों का Silence, please. Maintain silence. बताइए, कोई डाउट इस एरिया में? For this coming to, if there is any query regarding CRPC episode or anything legal or civil law, you can ask. उसको होगा डाउट? कुछ नहीं, सबको सब क्लियर है. समझदार वाले क्या आप लोग? इतनी अच्छी बात है, बताइए. चलिए कोई बात नहीं, ये बात आप लोग को about flag, about sir. नहीं कुछ? हाँ बताइए, सुन लो. NLSIU बैंगलोर, लेकिन टॉप 10
10 कॉलेजेस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, आप टॉप में जाइए, सेकंड में जाइए, थर्ड में जाइए, बट द टॉप वन इज बैंगलोर, सबसे पुराना भी वही है, ठीक है ना। सेकंड वन इज इन हैदराबाद। टोटल 23 है इंडिया में आपको, लेकिन पटना में भी एक है, बिहार में भी एक है, चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी, और जो आपको 12th रैंक पे आता है, तो उसकी रैंक अभी उतनी अच्छी नहीं है, बट नया कॉलेज है तो उसमें बहुत सारी पोटेंशियल है, आगे वो और अच्छा करेगा ऑब्वियसली। और बताइए, देखिए मेरी हालत से मत डरिए, आदत है मुझे, मैं कोट पहन के धूप में इधर से उधर करता हूँ, पसीना आना ऑब्वियस है, लेकिन ये मत सोचिए कि सर को थोड़ा बचा देते हैं, सर ऐसे ही थोड़े परेशान से देख रहे हैं, तो परेशान बिल्कुल नहीं हूँ, आपका सवाल लेने को बिल्कुल इच्छुक हूँ मैं। तो कोई भी डाउट हो पूछिए मेरे से, अभी अभी टाइम है, आप लॉ पे, क्लैट पे कुछ भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए प्रिपरेशन कितने साल की नहीं चलती है, कितने साल का आप खत्म कर देते हो प्रिपरेशन, ये पूछो। तो मेरे लिए आइडियली मैंने तैयारी करा था 7 महीने में, तो मैं तो बोलूंगा 7 महीना इज इनफ, लेकिन आइडियली 1 साल लगता है, 2 साल अगर करो तो तुम्हारा 12th के साथ हो जाएगा। एज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इससे घबराना नहीं है, आप ही के एज वाले लोग पढ़ेंगे वहां पे एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट कोई भी 5 साल का लोग क्यों करेगा 50 साल में, इसलिए डोंट वरी। और यहाँ अटेंडेंस रिक्वायरमेंट भी 75% आपको क्लास में बैठना होगा, तो आदमी आप ही लोग के एज वाले होंगे, 12th वाले ही होंगे। और कुछ पैटर्न मैंने आपको बता दिया, 5 सेक्शन बता दिया, 120 नंबर का पेपर होता है बता दिया, पॉजिटिव 1 मार्क्स मिलते हैं, नेगेटिव का 0.25 मार्क्स डिडक्ट होता है बता दिया, राइट। दिसंबर में एग्जाम होता है, तो एक अच्छी चीज ये है कि आपको 12th के पहले एग्जाम हो जाता है, तो एक जो टेंशन होता है कि कहीं एग्जाम के चक्कर में अपना 12th ना रह जाए, वो वाला चक्कर इसके बाद नहीं है, एग्जाम पहले दिन देने वाला, और फिर 12th के लिए आपको 2-3 महीना मिलेगा अलग से, जब भी तैयारी कर सकते हैं। I did took a drop here because I had decided कि मैं 12th पहले अच्छे से फोकस करूं, मैंने उसके बाद ड्रॉप लिया, 7 महीना 8 महीना मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, and then I was able to clear this exam. Any other thing?